इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वर्ड मेमोरी मामले की सुनवाई होनी है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दे चुका है, जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती थी। अगर अब ईवीएम वर्ड मेमोरी पर कड़ी सुनवाई होती है तो यह चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दोहरा संकट बन सकता है। क्या है ईवीएम वर्ड मेमोरी मामला? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर देश में लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। ईवीएम वर्ड मेमोरी का मतलब यह है कि एक बार जब ईवीएम में वोटिंग पूरी हो जाती है तो उसकी मेमोरी को वर्ड यानी स्थायी रूप से लॉक कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न हो सके। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में ईवीएम की वर्ड मेमोरी को बदला जा सकता है, यानी वोटिंग डेटा के साथ छेड़छाड़ संभव हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों अहम? इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में काफी सख्त रवैया अपनाया था और साफ तौर पर कह दिया था कि यदि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी संभव पाई गई तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा होगा। बीजेपी के लिए क्यों बढ़ सकती हैं मुश्किलें? बीजेपी लगातार यह दावा करती रही है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और इनके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कोई भी बड़ा फैसला आता है तो यह बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका हो सकता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग की जवाबदेही। अगर कोर्ट ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग को कड़ी सफाई देनी होगी। इससे बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि विपक्ष लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। नंबर 2, चुनाव प्रक्रिया पर असर। यदि कोर्ट यह आदेश दे कि इस चुनाव में ईवीएम की बर्ड मेमोरी को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 3, जनता का भरोसा और विपक्ष का हमला। इस मामले के चलते विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेता पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। अगर कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आता है तो यह मुद्दा और गर्मा जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का झटका। बीजेपी को इस समय सिर्फ ईवीएम के मामले में ही नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है और चुनाव आयोग को सभी डोनर और रिसीवर की डिटेल सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। बीजेपी को कितना नुकसान? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती थी। पिछले आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच 57% से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिले। लेकिन अब जब यह स्कीम खत्म हो चुकी है तो बीजेपी की फंडिंग पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा? क्या हो सकता है इस हफ्ते? नंबर 1, ईवीएम मामले पर सख्त टिप्पणी। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कड़ी सफाई मांगता है और जांच के आदेश देता है तो यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। नंबर 2, चुनाव की प्रक्रिया पर असर। अगर कोर्ट कहता है कि ईवीएम की बर्ड मेमोरी सुरक्षित नहीं है तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर चुनाव का विकल्प देना पड़ सकता है, जिससे बीजेपी की चुनाव गणित पर असर पड़ेगा। नंबर 3, इलेक्टोरल बॉन्ड पर और खुलासे। अगर चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा सार्वजनिक करता है तो पता चलेगा कि बीजेपी को किन कंपनियों ने पैसा दिया और बदले में उन्हें क्या मिला। बीजेपी की रणनीति क्या होगी? बीजेपी इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। बीजेपी और चुनाव आयोग को यह दावा कर सकते हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और अदालत को तकनीकी विशेषज्ञों के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी यह तर्क दे सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थे और अन्य पार्टियों को भी इसका फायदा मिला। बीजेपी यह आरोप लगा सकती है कि विपक्ष हार के डर से ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे उछाल रहा है। विपक्ष का पलटवार। विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो सकता है। राहुल गांधी, अगर ईवीएम सुरक्षित है तो कोर्ट में सरकार को डर क्यों लग रहा है? अरविंद केजरीवाल, चुनाव में निष्पक्षता जरूरी है, बीजेपी की पोल खुलने वाली है। अखिलेश यादव, बीजेपी की पूरी राजनीति ईवीएम और पैसे की ताकत पर टिकी है, दोनों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। क्या बदल सकता है यह हफ्ता? यह हफ्ता भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर सख्ती दिखाता है तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर चुनाव पर विचार करना पड़ सकता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से बीजेपी की फंडिंग और छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। चुनाव से पहले इन मुद्दों को उछालना बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। Lord, there is something inherently appealing in the argument of the petitioner. Justice has been done. That's the first, my lord, point that certainly strikes the judge. That some injustice has been done and we must step in and solve the problem. This is, my lord, the first. There are three limbs to the argument. This is the first, my lord. Prima facie looks very appealing that some injustice is being done to me. Why should not the court after? I will not go to that extent. Let me put it very clearly. Normally, as a court, there are two factors which play with us. One is to do justice, remedy the wrong. That's a factor. That's the instinct. That should and is No, should be the instinct. If there is something wrong, let's remedy not fix the the wrong. Two is the courts like to normally assume a power because adjudicatory functions should not be curtailed. So, my lord, Not be unnecessarily curtailed until unless the statute specifically, expressly, or by implication takes away that power. So if I can summarize, my lord, the other side, there are three limbs to the argument. One is, if there is some injustice, court's power should not be curtailed. The court ought to, as a matter of justice, step in and fix the problem. This is proposition one, my lord, which itself I will say something on. Proposition two is, if that be the case, then maybe 34 does not have the word vary or modification. However, in order to, my lord, support proposition one, I will persuade the bench to read it in one of three ways. One is adding words, one possible submission. Second is read it in 34(1) as part of setting aside. Second possible interpretation, according to me, my lord, the one which we will have to deal with. And third, forget 34(1), let us read it in 151. So this is point two, my lord. So point one is the court should have the power. Point two is, if the court has the power, these are one of three methods to do it. And three, realizing there's a problem with an untrammeled power, we realize there's a problem that there cannot be untrammeled variation. Guidelines have been suggested by various parties in various different ways. Possibly all of them, my lord, suiting their particular facts of the case. So everybody has their own, my lord, guideline, which perhaps will fit whatever factual background that particular individual has to place or perceived injustice. Lord, we are in a position, my lord, as the learned solicitor, my lord, we are not here on any particular set of facts. There are weighty arguments. They are appearing for whom? My lord, I am appearing for UNCITRAL, UNCCI, my lord. We have intervened as UNCITRAL. There are weighty arguments, my lord, which have been made on the other side, no doubt, my lord. But I will just, my lord, I think we should step back a little. Because I think, my lord, we are proceeding on a bit of a misconception, which is this. My lord, we are treating this as an appeal from a judgment. In our mind, my lord, in the court's mind, that the thinking is that this is in some way an appeal from a decision by a inferior court. And, my lord, there are at least, I'll attend them, my lord. My lord, there are at least 3 or 4 aspects which your lordships will consider before coming to the next question is, when can you attack an award? So, my lord, what is critical here is that an award is a baby of a private dispute. It is supposed to be out of the system. It is not supposed to be in the system. It is supposed to be out of the system. There are some implications here. My lord, an award is meant to be final and binding. Very important.
It has to be final and binding. It is a consensual process. The moment the arbitrator finishes, his mandate gets over. Consent is over. Subject to, of course, correction and remand. The mandate is over under Article 32. The arbitral tribunal becomes functus officio. So, my lord, there are two policy aspects to an award which are not there in a lower court judgment. One is party autonomy, and I'll explain what is the relevance because I think this is crucial. And secondly, my lord, finality. You go into arbitration, nobody is forcing you, my lord. We have to proceed on the basis that nobody is forcing you to go to arbitration. It is a consensual process. The consequence of this, which has not been, my lord, probably appreciated by the other side, is an arbitrator can be. EVM scam last 10 years. Nation lost GDP, rupees, and democracy gone. EVM scam last 10 years lost nation for sent jail. EVM scam Rajiv Kumar, EVM scam Modi, EVM scam Shah, EVM scam exit poll Godi media. Thank you very much.